Apostrophes. Rule number 1. Use an apostrophe in a contraction, a word that is short in combination of two words. तो आप apostrophe को contraction में use करते हैं. Contractions are used in informal writing and serve to shorten two words by leaving out some letters and joining two words with an apostrophe. तो उस contraction के अंदर आप कुछ words skip कर देते हो और ये informal writing का part होते हैं और इसके अंदर आप कुछ लेटर स्किप कर देते हो और वहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी लगा देते हो. कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जैसे इट इज़, इट्स, आई एम, आई गोमा एम, ही विल, he'll, they are, you are, and the list continues. So the use of contraction is quite simple. If you wish to shorten two words into one, and it is appropriate to do so using an apostrophe. ठीक है, तो अगर आप दो वर्ड्स को शॉर्टन करना चाहते हो ये apostrophe के साथ काफ़ी appropriate है और ये एक प्रैक्टिस है जो होती है. You simply replace the words with the correct contraction. There are however some common mistakes people make when using contractions. अब हम कुछ mistakes के बारे में बात करेंगे जो लोग करते हैं when they are making using the contractions. There are a few contractions that sound like possessive words and that these are often confused. इसका क्या मतलब है, जैसे कि there जो है वो sound like करता है there की तरह, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ हैं और आपको contractions यूज़ करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है. So example is, I don't know where they think they are going, but they are going to end up at a dead end. When I saw them heading towards the dead end, I assumed they did not know their way. तो उनको उनका रास्ता नहीं पता था. तो देयर का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है. तो देयर एंड देयर इसका बहुत ध्यान रखना है. दे आर गोइंग टू रन इन टू अ डेड एंड बिकॉज दे डोंट नो देयर वे. रिमेंबर कि दे आर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर दे आर. There is the third person plural possessive. The next pair of words to watch out for contraction is your and possessive your. Example, you're not going to succeed in school if you don't study hard. Example, your success in school is dependent upon hard work. अब दोनों को साथ देखते हैं. You're not going to succeed in school if you don't try your best in all you do. Your is short of you are and your is the second person singular possessive. The final pair of words that can be confusing are its and its. It seemed impossible for a cat to travel that far to get home. Example of its is, a cat will try a long way to find its way home and the family it loves. अब दोनों की example. It is amazing that the distance a cat will travel to find its way back home. Be careful when you use its or its. Remember that its is contraction for it is and its is the third person singular possessive. To check for proper use of contraction, especially those that can be tricky, substitute the words that have been replaced by the contraction. If the full learned word makes sense, the contraction is correct. तो अगर आप फुल लेंथ को वर्ड को जैसे इट्स की जगह आप इट इज़ लगाए वो सेंस मेक कर रहा है तभी वो कंट्रैक्शन ठीक है, वरना वो ठीक नहीं है. वंस अगेन दो कीप इन माइंड दैट कंट्रैक्शंस आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर यूज इन इनफॉर्मल राइटिंग. हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं. यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशन. ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी को पोजेशन शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. टू शो पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स एड एन अपॉस्ट्रोफी एंड एन एस. Teddy cleaned the dog's house before he and his family went on vacation. The teacher used Julia's homework as an example because it was exceptional. She didn't feel comfortable borrowing Harish's car. To show the possessive form of plural noun, add an S and an apostrophe. तो पहले हम सिंगुलर की देख रहे थे, अब हम प्लूरल की देखते हैं. उसकी एग्जांपल्स क्या है? कोच हैनिगन distributed the girls' uniform at a soccer practice. अब देखो गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल था, उसके हमने apostrophe लगा दी. Some plural nouns however do not end in S. ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? Add an apostrophe and an S. The women's meeting will be held in the gymnasium on Thursday night. All of the children's bike will be parked in the driveway. Competition between men's sport team is fierce. So अब आपको करना क्या है? when you are using an apostrophe, check for correct use of apostrophe with the possessive by first identifying the noun that show possession. उसके बाद आइडेंटिफाई करें whether the noun is singular or plural. अगर noun singular है तो ऐड करें apostrophe and an S. अगर noun plural है तो ऐड an S and an apostrophe. Finally, S के बाद यानी कि apostrophe लगा दें. Finally, take note of any irregular pronoun nouns that do not end in S. अगर कोई plural nouns S में नहीं end करे तो आपने क्या करना है? apostrophe और S उसके आगे लगा